ट्रेन कैसे हो बेटा? कैसी चल रही पढ़ाई? जी 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 सर। अच्छी चल रही। जी अच्छा। न्यूक्लियर रिवीजन कर लेंगे बेटा जल्दी से। छोटा टॉपिक है, जल्दी भी हो जाता। ओके। सो द फर्स्ट पॉइंट बेटा, आप लोगों को ऑलरेडी मालूम है न्यूक्लियस कंटेन व्हाट बेटा? न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, प्रोटॉन। isn't it? And these are called as what? These are called, बोलना जल्दी, न्यूक्लियॉन्स। These are called as what for me? Nucleons. So nucleus contains neutron and as well as a few proton, and they are combinedly called as what for me? Or nucleons. Next I can see. If I need to calculate the total number of nucleons, how do you do that one, beta? Total number of nucleons must be equal to your number of neutrons plus number of protons. ये दे देगा मेरे को टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है ना? अब ये रिप्रेजेंटेशन से आपको ऑलरेडी मालूम है, फिर भी लिख रहा हूं मैं। Z रिप्रेजेंट्स मी दी टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, है कि नहीं? Am I clear? And capital A represents me what beta? Number of protons plus number of neutrons. That is nothing but mass of neutrons. और A minus Z will represents me the number of neutrons. ये तो आप लोगों को मालूम है ऑलरेडी। So Z represents me total number of protons, A represents me the total number of protons and neutrons, and A minus Z will represents me the number of your neutrons. Am I clear? इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, याद है बेटा किसी को? How do we represent it? X, Z, A. Z represents me atomic number, and A represents me the mass number. I can write here right now. Z is equals to your atomic number, isn't it? And A represents me your mass number. A represents me the mass number. And what do you X represents beta? X is any nuclei. It can be your any nuclei like hydrogen, oxygen, nitrogen, जो भी हो सकता है, that we can take it out. Am I clear? Sure. Yes. Next one and very important, size of nucleus. Size of nucleus. छोटा चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है बेटा, डैम श्योर क्वेश्चन पड़ता है इसके अंदर। रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, याद है किसी को? R is directly proportional to a power 1/3. Proportionality constant निकाल रहे हैं अपन, so we'll get R is equals to R naught a to the power of 1/3. Can anyone tell me what is A representing here, beta? A is right now for me what? A is equals to mass number. A is your mass number. और नॉट की वैल्यू याद है किसी को? और नॉट की वैल्यू कितनी होती है? 1.2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -15 मीटर्स, या इसको सिंपली अपन बोलते हैं 1.2 फर्मी। फर्मी का सिंबल क्या होता है? FM। ठीक है। कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द साइज ऑफ एटम बेटा? साइज ऑफ एटम याद है किसी को? साइज ऑफ एटम is approximately 10 power -10 meter. And what is the size of nucleus? ये very important है बेटा, इसमें problems बनते हैं। Approximately 10 power -15 meters, याद रखना अपने। Size of your atom is equals to 10 power -10 meter, and size of your nucleus is equals to 10 power -15 meter.
क्लियर? चलो नेक्स्ट वन, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बोलो? डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम। Density rho is equals to mass divided by density is equals to mass by volume. Mass of your nucleus is A into m divided by volume is spherical shape में रहेगा तो 4 by 3 pi into your r cube. So m is nothing but what beta? Can anyone tell me? M is nothing but a mass of proton. ठीक है, चलो इसको सिंप्लीफाई करो। रो इज इक्वल्स टू ए इंटू एम डिवाइडेड बाई 4/3 पाई। आर की वैल्यू कितनी है बेटा? और नॉट ए टू द पावर ऑफ 1/3 टू द पावर ऑफ 3। ठीक है ना? तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ तो दिस वैल्यू विल बिकम फॉर मी 3। दिस विल बी इक्वल टू योर ए एम डिवाइडेड बाई दिस इज 4 पाई आर नॉट क्यूब, दिस विल बी इक्वल टू ए और ये गेट कैंसर। So can I say that density of nucleus is independent of your A? What do you mean by A beta? A is nothing but total mass number. Mass number पे independent है. So density का फॉर्मूला क्या बन गया? Rho is equals to 3 times of your m divided by 4 pi into r naught cube. पूरे constant से देखिए बेटा, ठीक है ना? अगर इसको कैलकुलेट कर रहे हैं अपन, सो रफली विल गेट द आंसर एज डेंसिटी का जो रेशियो है दैट इज 2.3 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 17 यूनिट इज केजी पर मीटर क्यूब। ये वैल्यू याद रखना है बेटा, पावर में याद रखना है। 2.3 आया भी नहीं रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेंसिटी का जो रेशियो है दैट इज इन द पावर ऑफ 10 पावर ऑफ योर 17। और डेंसिटी का फॉर्मूला है न्यूक्लियस में 3m 4/3 पाई इंटू और नॉट क्यूब। और और नॉट की वैल्यू कितनी है बेटा? 1.2 फर्मी। 1.2 फर्मी, 1 फर्मी इज 10 टू द पावर ऑफ -15 मीटर्स। हमें क्लियर? हमें क्लियर? Yes, sir. चलो छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, जल्दी से आंसर बताने की कोशिश करिए आपको। ए न्यूक्लियस ऑफ मास नंबर 189 splits into two nuclei, splits into two nuclei having mass number 125 and 64. Okay, the ratio of the two daughter nuclei, very good question बेटा, daughter nuclei is, थोड़ा ट्राई करिए। तो न्यूक्लियस है मेरे पास जिसका मास नंबर कितना है? 189। मान के चलो ये न्यूक्लियस है जिसका मास नंबर कितना है? 189। अब ये स्प्लिट हुआ है, स्प्लिट इनटू टू न्यूक्लियाई ऐसा। एक का मास नंबर है 125 और एक का मास नंबर है 64। द रेशियो ऑफ द डॉटर न्यूक्लियाई पूछ रहा है। रेडियस किसके प्रोपोर्शनल रहता है बेटा? आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर 1/3, isn't it? So can I say that R1 divided by R2 is equals to A1 divided by A2 to the power of 1/3। A1 की वैल्यू कितनी है? 125। A2 की वैल्यू कितनी है? 64 to the power of 1/3। So this will be equal to how much value? ये हो जाएगा 5 क्यूब, ये हो जाएगा 4 क्यूब to the power of 1/3। तो चले जाएगा, so it will be equal to 5:4 will be the answer। आ गया? Am I clear? Yes. Sure. Next one. Now this is a really very good question। ट्राई करो आप लोग। Which of the following, शिरीन बोलना बेटा, following figure represents the variation of ln r divided by r naught with ln a। ln बोलो, log बोलो, सेम है बेटा। if कई को रिसीव कर रहे हैं आप लोग? ठीक है, if
capital R is equals to radius of nucleus and capital A is equals to its mass. Okay, graph there on the phone. First graph is like this. Here it is ln R by R naught versus this is ln A. This one is also ln R divided by R naught versus ln A. This one is also ln R divided by R naught ln A. Ln matlab log. This one is ln R divided by R naught. This one is ln A. First graph जो है ऐसा है roughly. Second one is straight line. Third one is like this. And fourth one is like this. चलो try करो. Which of the following figure represents the variation of ln R by R naught? Ln R by R naught. Ln R by R naught with ln A. कौन सा ग्राफ होगा? रेडियस का फॉर्मूला लिखो पहले. आर मतलब क्या? रेडियस ना बेटा. रेडियस का फॉर्मूला क्या है मेरे पास? आर इज इक्वल्स टू आर नॉट ए टू द पावर ऑफ 1/3. तो आर बाई आर नॉट ले लो दिस साइड. दिस विल बी इक्वल टू ए पावर 1/3. ठीक है ना. अब दोनों को लॉन ले लो ऑन बोथ द साइड. सो इट इज लॉन आर बाई आर नॉट इज इक्वल्स टू दिस इज ln a to the power of 1/3. यानी this value will become for me ln r by r naught is equals to 1/3 ln of your a, ऐसे लिख सकता हूँ, isn't it? So this is the equation what we got. Now compare it with the standard equation. Y is equals to m into x. Y एक्सिस पे क्या है? ln है. x एक्सिस पे क्या है? ln ये है. स्लोप कितना हो गया? tan थीटा. प्रॉब्लम में पूछ सकता है कभी कभी व्हाट इज द स्लोप. m इज इक्वल्स टू 1/3. यह मतलब tan थीटा. tan थीटा की वैल्यू 1/3 यानी थीटा की वैल्यू इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 1/3. ऐसा भी पूछ सकता है, एंगल भी पूछ सकता है. तो now what will be the graph बेटा? Y is equals to mx मतलब क्या हो जाएगा? It will be a straight line passing from the origin. Am I clear? Very good. Second option will be the answer. Clear? चलो आई बात समझ में सभी को. R is equals to R naught a to the power of 1/3. पूरे R टर्म्स मैंने एक जगह ले लिया. R by R naught is a power 1/3. इसके बाद मैंने ln ले लिया on both these sides and simplified it. So ln R by R naught is equal to 1/3 times of ln A. Ln R by R naught is y-axis, ln A is x-axis, and slope is 1/3. Clear? चलो और एक क्वेश्चन ट्राई करिए. If the radius of nucleus, जल्दी जल्दी बोलना, फर्स्ट टाइम नहीं सुन रहे आप लोग. X 256 is 8 Fermi. ठीक है. Then the radius of helium 4 nucleus will be कितना हो? चलो ट्राई करके बता. The radius of the nucleus is x. X can be anything better. Any nucleus is 8 Fermi. Then the radius of the helium nucleus will be equal to how much? Sir, 2. ऊपर में आया. Very good. What is the formula again? Same. Radius is directly proportional to a power 1/3. Radius of helium divided by radius of your x is equals to मास नंबर है तो हीलियम का हो गया 4, x का हो गया 256 टू द पावर ऑफ 1/3. ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 64 टू द पावर ऑफ 1/3. ये हो जाएगा 1/4 पावर 3 टू द पावर ऑफ 1/3. फिर 3 3 कट जाएगा. इट विल बी इक्वल टू 1/4, isn't it?
यानी radius of helium is equals to radius of x nuclei divided by 4. Radius of x nuclei is 8 Fermi divided by 4. 4 ones are 4 twos are. So this will be equal to 2 Fermi. Clear? Sure. Next one देख लीजिए बेटा. ये तो आपको आता है, but just मैं आप रिवीजन के हिसाब से लिख रहा हूँ. What do you mean by isotopes? What do you mean by isotones? Chemistry में आप लोग को आता है already. And what do you mean by isobars? So, what do you mean by isotopes बेटा? इसमें देखो P को याद रख लो, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. आइसोटोन्स में N को याद रख लो, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. आइसोबार मींस सेम नंबर ऑफ योर मास नंबर. ठीक है ना? दिस वन इज सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. That means Z will be same, atomic number will be the same. Now next one is same number of neutrons. That means A minus Z is equals to same, I guess. Isobars में we have same number of mass. Same mass number, we can say. Number of mass, that is A is equals to same. Am I clear? तो ज्यादा important नहीं था. Now this is very important. यहाँ से जरा important part start होता है. Sure. Next one is mass energy relation. Mass energy relation. Mass energy relation. याद होगा आप लोगों को? According to the Einstein's mass is nothing but what? Form of energy. In relation between the mass and energy क्या है बेटा? E is equals to m into c square. Relation between energy and mass is E is equals to m into c square. C is the speed of light, isn't it? Am I clear? C is your speed of light, m is your mass, E is your energy. What is the unit of energy बेटा? AMU. 1 AMU is equals to how much? आप लोग chemistry में पढ़े थे. 1 AMU is equals to 1 by 12 times of mass of your C12. Or approximately 1 AMU is approximately equal to 1.67 into 10 to the power of minus 27 kg. Clear? अगर मास अपने को AMU में है, then how do you write the energy? If mass is in AMU, अगर kgs में रहा है तो 1.6. अगर mass is in atomic mass unit, then energy will be equal to E is equals to mass in AMU लिख लो and multiply with your 931.5 MeV. That will give me the answer. Very important formula. E is equals to mass in AMU है तो directly 931.5 से AM multiply कर लो. That will give me the energy. Clear? So relation between mass and energy is E is equals to mc square. When AMU is equals to 1.67 into 10 power minus 27 kg. Now this is something important. If mass in AMU, then energy will be equal to your mass multiplied by 931.5 MeV. M is your mega electron volt. 1 electron volt की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 1 electron volt is equals to 1.6 into 10 to the power of minus 19. ठीक है? एक पॉइंट यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट है, उसको टर्म मार्क लिखना होगा. In any nuclear reaction, mass is not conserved. Mass is not conserved, but mass plus energy लिखना, that is very important. Mass plus energy will remain constant. Will remain
constant, or I can say it is conserved. बस समझ में आई? Mass is not conserved in any nuclear reaction, but mass plus energy will remain conserved. क्योंकि जैसे हम लोग एनर्जी का इक्वेशन लिखते हैं टाइम पे लास्ट में क्यू बोल के लिखते हैं, आप लोग आइडिया है कि नहीं? सो दैट इज द रीजन वी से दैट इन एनी न्यूक्लियर रिएक्शन मास इज नॉट कंजर्व. एक्चुअली मास कंजर्व रहना, क्योंकि जितना इनिशियल रहेगा उतना ही फाइनल होना चाहिए, लेकिन न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर मास के साथ एनर्जी दोनों रहे तो ही कंजर्व रहेगा, अदरवाइज इट इज नॉट कंजर्व. समझ लिया? Yes. अच्छा, और एक यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट है, उसको भी आप लोग याद रखो बाय हार्टेडली, वरना आप डिटेल में कहते पे टाइम लगता. एनर्जी विच इज equivalent to mass of electron, mass of electron is almost all equal to 0.51 mega electron volt. याद रखो बेटा, एनर्जी इक्विवेलेंट टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी होगी? 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इसी तरह से और एक पॉइंट, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन एनिहिलेशन, यानी इसका रिएक्शन, इन दोनों का जब रिएक्शन होता है इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन का, यानी मैं इक्वेशन लिख के बता रहा हूँ, देखो एक इलेक्ट्रॉन प्लस एक पॉजिट्रॉन, जब दोनों को हम लोग कंबाइन कर रहे हैं, कंबाइन करते से टाइम पे जो एनर्जी रिलीज होगी दैट विल बी 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. दैट इज नोन एज इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन एनिहिलेशन रिएक्शन. ई माइनस इज इलेक्ट्रॉन, ई प्लस इज योर पॉजिट्रॉन. याद रहेगा ना? दिस इज योर इलेक्ट्रॉन एंड दिस वन इज योर पॉजिट्रॉन. दोनों जब रिएक्ट करेंगे, हाउ मच अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड? 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. समझ लिया? Yes. चलो, next one again very important, mass defect and binding energy. Mass defect and binding energy. जनरली क्या होता है बेटा मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी? मतलब जनरली क्या है, मास ऑफ न्यूक्लियस जो भी रहेगा इट इज स्लाइटली स्मॉलर देन द मास ऑफ देयर न्यूक्लियॉन्स. न्यूक्लियस में क्या रहता है बोलो? प्रोटॉन एंड एज वेल एज ऑफ योर न्यूट्रॉन. जब वो कंबाइन करेंगे तो दैट शुड बी गिव मी द मास ऑफ न्यूक्लियस. जैसे मान के चलो आप बोल रहे हो सर 1+2 मस्ट बी इक्वल टू 3 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, 1+2 इज इक्वल्स टू, शायद यहाँ पर 2.5 हो रहा है, या दिस इज 2.9 हो रहा है, या दिस इज 2.8 हो रहा है, बट 3 के बराबर नहीं हो रहा. बात समझ में आ रही? समझ लिया? Yes. मतलब अपनी फिजिक्स के लैंग्वेज में अगर समझ रहे हैं इसको, जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन कंबाइन कर रहे हैं, जैसे मान के चलो ये न्यूट्रॉन है प्लस प्रोटॉन है, फिर न्यूट्रॉन है, फिर प्रोटॉन है, फिर न्यूट्रॉन है, फिर प्रोटॉन है, ऐसा एन नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन सब है, ये जो पूरे कंबाइन करके एक न्यूक्लियस फॉर्म करेंगे अपने, isn't it? It has neutron, proton, neutron, proton, proton, neutron, neutron, proton, ऐसा कॉम्बिनेशन रहेगा, ठीक है ना? प्लस इसके साथ क्या होगा, सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी. ठीक है, हमें लिए ये जो न्यूक्लियस है इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एक्स जेड ए, isn't it? और ये जो एनर्जी निकल रही है ना, इस एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं? बाइंडिंग एनर्जी बोल रहे हैं. दिस इज कॉल्ड एज ऑफ योर बाइंडिंग एनर्जी. ये मिलाई तो इसके मास के बराबर हो. हमें लिया? बस समझ में आई? मैं लिख देता हूँ कुछ जनरली क्लैरिटी रहेगी. इट इज ऑब्जर्व्ड दैट रिएक्शन के टाइम पे मास ऑफ ए न्यूक्लियस, मास ऑफ ए न्यूक्लियस, ए न्यूक्लियस, ए न्यूक्लियॉन से, ओके, मास ऑफ ए न्यूक्लियस is slightly smaller than the mass of nucleus, mass of their nucleus. This difference
this mass difference कोई हम लोग क्या बोलते हैं, mass defect is called mass defect represented by delta m. Am I clear? It is observed that mass of your nucleus is slightly smaller than the mass of their nucleons. This mass difference is called as of your mass defect. ठीक है ना? कैसे लिखेंगे इसको, देखो, डेल्टा m is equals to mass of your expect जो हो रहा ना वो वाला expected mass minus observed mass. ये जो डिफरेंस होगा ना उसी को हम लोग मास डिफेक्ट बोलते हैं. ठीक है ना? जैसा मैंने बोला 1+2 = 3 होना चाहिए, वो हमारा एक्सपेक्टेड आंसर था, लेकिन 2.9 आ रहा है, सो 3 - 2.9 0.1 दैट विल बी द मास डिफेक्ट. ठीक है ना? तो इसको हम लोग फॉर्मूले में कैसे लिखेंगे, डेल्टा m इज इक्वल्स टू न्यूक्लियॉन्स मतलब z इनटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस a माइनस z इनटू मास ऑफ योर न्यूट्रॉन्स. दिस इज योर मास ऑफ योर न्यूक्लियॉन्स एक्सपेक्टेड minus observed जो रहेगा that is mass of your x nucleus. This will be the mass defect का formula. Am I clear? Delta m is equals to z into mp plus a minus z means the number of neutrons multiplied by mass of neutrons minus mass of your nucleons. तो ये हो गया मेरे पास mass of nucleons और ये हो गया mass of nucleus. ठीक है ना बेटा? चलो, और यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट लिख लो. बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल्स टू डेल्टा m इंटू सी स्क्वायर. सेम एनर्जी का फॉर्मूला जो होता है ना उसी तरह से. डेल्टा m क्या है, मास डिफेक्ट. मास डिफेक्ट ऑफ योर न्यूक्लियस. अगर डेल्टा m AMU में है, इफ डेल्टा m इज इन AMU एटॉमिक मास यूनिट, तो जब बाइंडिंग एनर्जी विल बी इक्वल टू डेल्टा m इन AMU लिख लो और उसको मल्टीप्लाई कर लो डायरेक्टली 931.5 MeV से. That will give me the binding energy. ठीक है ना? So binding energy is equals to delta m into c square. Yeah, binding energy is equals to delta in AMU multiplied by your 931.5. या ओवरऑल मैं बाइंडिंग एनर्जी ऐसे लिख सकता हूँ क्या, बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल्स टू फॉर्मूला, बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल्स टू z into mass of protons plus a minus z into mass of your neutrons minus your mass of your nucleus. This will be your binding energy multiplied with your c square. Clear? क्लियर हो गया ना? मास डिफेक्ट क्लियर है? Yes, sir. चलो जल्दी से क्वेश्चन रख लो. If 1 milligram of uranium 235 is completely annihilated, annihilated मतलब खत्म कर दिया, the energy liberated is, the energy liberated is, कितनी एनर्जी लिबरेट होगी, तो ट्राई करो. 1 milligram of uranium is completely annihilated, the energy released, एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, E is equals to m into c square. मास कितना है बेटा, मास इज इक्वल्स टू 1 milligram, that means it is 10 power minus 3 gram. Yeah, that will be equal to 10 power minus 6 kg. So that will be equal to 10 power minus 6 into speed of light 3 into 10 to the power of 8 ka whole square. So this will be equal to 9 into 10 to the power of 16 minus 4 minus 6. So it will be equal to 10. Unit will be equal to joule.
and 1 electron volt will be equal to 1.6 into 10 to the power of minus 19 joule. अगर joule में लिखना है तो we can write in terms of electron volt. This will be the energy transfer. हमें क्लियर? हमें ऑडिबल बेटा? Yes. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. The masses of neutron and proton are 1.0087 AMU atomic mass unit में है बेटा, and 1.0073 AMU. Okay, if neutrons and protons combine to form a helium nucleus, helium nucleus मतलब क्या? अल्फा पार्टिकल. तो He4 is called as helium nucleus of mass 4.0015 AMU, and the binding energy of helium will be 1 AMU कितना होता है बेटा? 931 MeV लिख लीजिए कैलकुलेशन. तो ट्राई करिए. The masses of neutron and proton और न्यूट्रॉन दोनों कंबाइन हो रहे हैं बेटा. So they are forming for what? Helium nucleus. Helium nucleus मतलब 2He4 होना है. तो कितनी न्यूट्रॉन्स और कितनी प्रोटॉन्स ऐड होना चाहिए? 2 न्यूट्रॉन प्लस 2 प्रोटॉन, है कि नहीं? तो इसका मास डिफेक्ट कितना हो जाएगा? मास डिफेक्ट निकालो. डेल्टा एम इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ योर न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ योर हीलियम न्यूक्लियस. सो दैट विल बी इक्वल टू 2 इंटू मास ऑफ योर प्रोटॉन कितना है बेटा? 1.0073 plus 2 times of mass of neutron 1.0087. ठीक है ना? माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस इज 4.0015. सब कुछ एएमयू में है बेटा. तो ये कितना बन जाएगा देखो? टू इंटू 1.0073 प्लस 2 इंटू 1.0087. इट इज अप्रोक्सीमेटली 4.032 माइनस 4.0015. सो अगर इसको निकालू मैं, 5 में से 2 चले जाएगा 12. So this will be here 5, will be 0, will be 3, 0, 4 में से 4 चले गया 0. So it is 0.0305 डिफरेंस. ठीक है ना? तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी निकालो. बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एम इन एएमयू में लिखना है मल्टीप्लाइड बाई 931.5 MeV. लेकिन प्रॉब्लम में आपको क्या लिया बोला? 931 लिया बोला. तो डेल्टा एम की वैल्यू कितनी है? 0.0305 इज डेल्टा एम इन एएमयू. दिस इज एवरीथिंग इज इन एएमयू मल्टीप्लाइड बाई 930. इसको मल्टीप्लाई कर लो, सी हाउ मच यू आर गेटिंग अप्रोक्सीमेटली. छपी आंसर दिए 28.93 का समथिंग. ओके,
So approximately 28.4 MeV. Clear? Okay, 28.395 approximately. I can make it as 4. Then next slide. Binding energy per nucleon. Binding energy per nucleon. मतलब क्या बेटा? Binding energy divided by total number of nucleons. Directly लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर. Binding energy divided by total number of nucleons. So this is binding energy divided by A. Okay. What did it gives me beta? It gives the stability of your nucleus. इसका मतलब क्या है यहाँ पर? More is the binding energy per nucleus. इस पे क्वेश्चन आ चुका है बेटा. More will be stability. More will be stability. Okay, of that nucleus. तो स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस कैसे निकालोगे? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन करना है. क्या करना है? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन करो. अगर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मोर विल बी, मोर इज द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, मोर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ दैट न्यूक्लियस. ओके, मोर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ दैट न्यूक्लियस. क्लियर? इसका ग्राफ था, याद है? फिर ड्रॉ कर रहा हूँ. यहाँ पर हो गया वो एक्सेस पे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, और यहाँ पर हो गया मास नंबर. ये ठीक है. तो ग्राफ विल बी समथिंग लाइक दिस. ठीक है. और यहाँ पर जो होगा मोस्ट स्टेबल एलिमेंट विल बी आयरन, Fe56. ठीक. एंड यहाँ पर जो होगा दिस विल बी ए लेसर देन 30. तो क्या हो रहा है? फर्स्ट इंक्रीज हो रहा है, देन इसके बाद डिक्रीज हो रहा है विद द मास नंबर. क्लियर? तो मान के चलो थोड़ा क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको. क्वेश्चन कैसे फ्रेम होता है यहाँ पर. मान के चलो मेरे पास दो न्यूक्लिया है, ए एंड बी. ओके. ए की बाइंडिंग एनर्जी है और ए का मास नंबर भी है, दैट इज कैपिटल ए. ठीक है ना. ये हो गया 200 MeV और इसका मास नंबर है 10. और एक का है 500 MeV बाइंडिंग एनर्जी और इसका मास नंबर है 50. माय क्वेश्चन इज हु इज मोर स्टेबल? चलो बताओ. बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकालना है आप लोग. अभी बोला स्टेबिलिटी कैसे निकालोगे आप?
binding energy per nucleon, that is binding energy divided by mass number of your A element. ये कितना होगा 200 divided by 10. So this will be equal to 20 mega electron volt. उसी तरह से binding energy per nucleon of B element, ये कितना है 500 divided by 50. ये वाला चलेगा 5 1 जा 5 10 जा. This will be equal to 10 MeV. So he is more stable beta 20. So A is more stable. A is more stable. क्लियर? आई बात समझ में? Yes. Sure. Next one. Q value of a reaction. Q value of a reaction. चलो एक रिएक्शन लिख रहा हूँ, देखो मैं मान के चलो A is getting reacted with B. Okay, we get some product C plus some byproduct plus certain amount of your energy. Okay, Q is nothing but what? Released energy. This is your released energy. Okay, you need to apply the conservation of mass plus energy better. यानी LHS का एनर्जी इतना होगा, RHS का भी एनर्जी उतना ही रहना चाहिए, isn't it? By conservation of mass plus energy. तो मैं इसका मास डिफेक्ट कैसे लिख सकता हूँ बताओ? Mass defect for this reaction, delta M will be equal to mass of reactants minus mass of product. So this will be the mass defect. मतलब इसमें रिएक्टेंस क्या है यहाँ पर A plus B, यानी इसका मास डिफेक्ट will be delta M is equals to mass of your A plus mass of your B, mass of your A plus mass of your B minus reactants मतलब mass of C plus mass of D. This will be the delta. क्लियर है? अगर इसकी एनर्जी रिलीज कितनी निकालोगे, हाउ डू यू कैलकुलेट द एनर्जी रिलीज्ड फॉर दिस वन? एनर्जी रिलीज्ड यानी क्यू वैल्यू, क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा एम मल्टीप्लाइड बाय सी स्क्वायर कर लो. सी इज योर स्पीड ऑफ लाइट. अगर ये म्यू में है तो 931 से मल्टीप्लाई कर लो. हमें क्लियर? क्लियर है बेटा? Yes, sir. यानी एनर्जी रिलीज विल बी इक्वल टू हाउ मच पर यू. अगर क्यू वैल्यू में लिखना चाह रहे हो और डिटेल में आप, तो क्यू इज इक्वल्स टू, आई कैन राइट बाइंडिंग एनर्जी ऑफ योर प्रोडक्ट minus binding energy of your reactant. यानी Q is equals to energy of product यानी C plus energy of your D minus energy of your A plus energy of B. This will be the Q value. Clear? So Q value in terms of binding energy कभी भी लिख रहे हो तो Q is equals to how much for me? Binding energy of the products minus binding energy of reactants. This is the Q value. Clear? Sir, in these three formulas, we use any one, sir? Q value in terms of E में दे रखा है ऑप्शंस में. एनर्जी ऑफ ए, एनर्जी ऑफ बी, एनर्जी ऑफ सी, उसका फॉर्मूला लिखो बोले तो क्यों लिखेंगे? या डायरेक्ट बाइंडिंग एनर्जी दे रखा है, क्यू की वैल्यू निकाल दो, तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स. मैं आपको मास नंबर्स दे रखा है, देन क्यू वैल्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा एम इनटू योर सी स्क्वायर. क्लियर? Yes, sir. श्योर.
छोटा सा नोट लिखिए बेटा। If product is more stable, it means energy will be released. Energy will be released in the reaction. तो जब Q वैल्यू बड़ी रहेगी छोटी रहेगी, ग्रेटर रहेगी, so Q वैल्यू will be greater than 0. That means it will be a positive. ठीक है ना? उसी तरह से if energy कम है, then it will be your observed. जैसे मान के चलो if Q value is lesser than 0, Q value is lesser than 0, it means energy should be given. Energy should be given to complete the reaction. To complete this reaction. Difference clear है दोनों में? फर्स्ट वाले में क्या, अगर एनर्जी ग्रेटर देन 0 है, एनर्जी विल बी रिलीज पीरियोडिकल क्वेश्चंस में. अगर Q की वैल्यू जो है ना, इफ Q वैल्यू इज लेसर देन 0, it means energy should be given. Energy should be given to complete this reaction. Am I clear? Yes. चलो एक क्वेश्चन देता हूँ, देखो ट्राई करो आप लोग. The binding energy per nucleon पर ये ड्यूटिरॉन and an alpha particle are x1 and x2 respectively. Okay. What will be the energy capital Q released in the reaction? Released in the reaction. Reaction लिख रहा हूं मैं यहाँ पर. 1H2 plus 1H2 gives you 2He4 plus certain amount of energy. चलो बताओ इसका Q वैल्यू कैसे लिखोगे? The binding energy per nucleon, per a deuteron and an alpha particle are x1 and x2. मतलब क्या? इसके लिए x1 है, इसके लिए x2 है, तो रिएक्शन में कितने हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ x1 और ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ योर x2. 2 टाइम्स ऑफ x1 x2 अल्फा पार्टिकल है ना, तो सॉरी, तो ये भी हो जाएगा 1. ये दो रिएक्ट करेंगे तो देन विल बी गेटिंग यू राइट नाउ 4 टाइम्स ऑफ योर x2. आई बात समझ में? मतलब बाइंडिंग एनर्जी कैसे निकालोगे? बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल्स टू, अभी फॉर्मूला बताया था, देखो मैंने क्या लिखा था एनर्जीज में, बाइंडिंग एनर्जी. Product minus reactant. Yes. हाँ, Q value will be equal to your binding energy of product minus binding energy of react. Reactant. So that means Q value निकालो इसका, Q value is equals to binding energy of reactants is equals to binding energy of product लिखना है ना पहले, Q is equals to binding energy of product यानी 4 times of x2 minus 4 times of x1. This will be the Q value. यहाँ पर देखो रिएक्शंस आपको कंप्लीट करना है, एज ए केमिस्ट्री स्टूडेंट यू विल बी हैविंग गुड नॉलेज. हीलियम न्यूक्लियस मतलब 2He4, तो बैलेंस हो गया ना इक्वेशन, 1 and 1 2, 2 and 2 4, so 2 times of x1 and 2 times of x1 reacts to form 4 times of x2. So these are your products. So binding energy of the products minus binding energy of reactants. आई बात समझ में? Yes, sir. अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ट्राई करना है. तीन ट्राई करो बेटा, आपको बोलना है अभी आप लोग भी. द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, कभी आपको भी बोलना है, ऑफ lithium 37 and helium 2He4
nuclei are 5.60 MeV. Very good question. Give it a star mark. And 7.06 MeV. So 7.06 MeV. Stop. In the nuclear reaction, lithium 37 plus 1H1 gives rise to 2He4 plus 2He4 plus certain amount of energy. The value of energy Q released. The value of energy Q released. कितना होगा? Binding energy per nucleon of lithium and helium nucleus. Okay, are 5.60 MeV and 7.06 MeV. Reaction दे रखा है problem है. Lithium reacting with one hydrogen gives rise to 2He4 plus 2He4 two times plus certain amount of your energy. Reaction क्या है? Lithium 37 plus 1H1. These are your reactants. Combines to give you 2He4 plus 2He4 plus certain amount of energy. तो टोटल बाइंडिंग एनर्जी कितनी हो जाएगी बेटा? सो इसका हो गया मास नंबर कितना है 7. इसके बाइंडिंग एनर्जी कितनी है 5.60. इसका तो कुछ भी नहीं है. इट विल बी इक्वल टू 0. नो बाइंडिंग एनर्जी. हाइड्रोजन इज ए फ्री. 1H1 क्या होता है बेटा? ये फ्री होता है. इसका कोई भी बाइंडिंग एनर्जी नहीं रहता. दिस इज योर फ्री इलेक्ट्रॉन. तो इसके लिए हो गया 0. देन राइट नाउ फॉर दिस वन 4 इंटू दिस वन इज 7.06 और इसका भी कितना हो जाएगा 4 इंटू 7.06. समझ में? तो क्यों निकालना चाहिए? क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है ना बेटा. बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन Q value will be equal to how much per? So binding energy will be equal to how much per me? Binding energy per nucleon of lithium is given for me 5.60. तो बाइंडिंग एनर्जी कितनी बनेगी 5.60 इंटू मास नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं. बात समझ में आई? तो मास नंबर ऑफ लिथियम कितना है 7. हीलियम कितना है 4. इसलिए 4 इंटू 7.06 कर रहा हूँ. आई होप यू गॉट दिस पॉइंट एवरीवन. एनी डाउट इन दिस वन? No, sir. Isn't it? 7 into 5.6 क्यों किया हुआ? क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज गिवन एज 5.60. सो बाइंडिंग एनर्जी इज 5.60 इंटू ये. इसी तरह से अनदर का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितना दे रखा है 7.06. तो बाइंडिंग एनर्जी विल बी इक्वल टू 7.06 मल्टीप्लाइड बाय इट्स मास नंबर. क्लियर? तो इसकी क्यू वैल्यू निकालना है. क्यू वैल्यू इज इक्वल्स टू बाइंडिंग एनर्जी ऑफ योर प्रोडक्ट्स दैट इज 4 into 7.06 plus 4 into 7.06 minus reactants that is 7 into 5.60. अब इसको मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर लीजिए. दैट विल गिव मी द आंसर. 7 into 5.6 कितना आ रहा था? 6 is 36, 7 to 42. So this will be equal to 2. 7 5 is 35, 35, 38, 39, 39.2 हो गया. Okay ना? So this one is 4 into 7.06 plus 4 into 7.06. कितना आ रहा है देखो? फोर इंटू 7.06 कितना है बेटा? 28 plus 95.24, sir. 0.24 approximately. Then 95.68. So this is 56 होगा ना बेटा? 56. Yes, sir. 56.48. 39.2. Minus. Oh, yes. ठीक है ना? माइनस करना है ना, ऐड नहीं होगा. तो ये कितना आ जाएगा 56.48 minus 39.2. That is approximately 17.28 ml. Very good. शाफी आप दे दिया आंसर ऑलरेडी. 17.28.
क्लियर? और एक क्वेश्चन करो, गुड क्वेश्चन। इन ये फिजन रिएक्शन, इन ये फिजन रिएक्शन मतलब हेवियर न्यूक्लियस splitting into your lighter nuclei is known as fission reaction. फिजन रिएक्शन क्या दे रखा है देखो, 92 uranium 236 splits into X 117 plus some other element Y 117 plus neutron plus neutron. ठीक है? The binding energy per nucleon, the binding energy per nucleon of X and Y, X and Y is 8.5 MeV, whereas uranium 236 is 7.6 MeV. Question is the total energy liberated. The total energy liberated will be कितना? First option is 2000 MeV. Second option is 200 MeV. Third option is 2 MeV. And fourth option is 200 keV. सही करो, गुड क्वेश्चन। ऐसे पहले जैसा करें ना वैसे ही करना। रिएक्शन लिखो पहले। रिएक्शन क्या है? ये रिएक्टेंट 92 236 is giving you 1x, that is 117 plus 1y, that is also 117 plus neutrons. ये जो न्यूट्रॉन्स है ना बेटा, दो वाले, दिस बोथ ऑफ देम आर फ्री। अगर ये फ्री है तो देर इज नो बाइंडिंग एनर्जी इन दिस। Then will be 0. इसकी टोटल बाइंडिंग एनर्जी लिखने का तरीका भी मैंने आपको बता चुका हूँ। दिस विल बी 236, दिस विल बी 236 मल्टीप्लाइड बाय 7.6, और x के लिए कितना हो जाएगा बेटा? 117 मल्टीप्लाइड बाय 8.5। इसका भी उतना ही होगा, 117 मल्टीप्लाइड बाय 8.5। तो की वैल्यू निकालना है, तो q इज इक्वल्स टू 117 into 8.5 plus 117 into 8.5 minus 236 into 7.6। अब ये देखो कैलकुलेशन थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, बट यू कैन डू इट आउट। 117 into 8.5, this is 994.5 plus 994.5, ये हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली 1989। ये कितना हो जाएगा? 236 मल्टीप्लाइड बाई 7.6, approximately 1793.6 MeV। ओके, तो ये अप्रोक्सीमेटली 200 MeV तक आ सकता है। ठीक है ना? just take care of your calculation। ऐसे वाले मॉडल्स प्रैक्टिस करना अच्छे वाले। बाइंडिंग एनर्जी निकालने का तरीका, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जब दे रहा है, और टोटल एनर्जी निकालने का तरीका इसका।
क्लियर? तो 100 MeV, वेरी गुड। चलो, नेक्स्ट वन इज न्यूक्लियर फोर्स। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स जो होती है न्यूक्लियर फोर्स होती है बेटा। सबसे वीकेस्ट कौन सी होती है? ग्रेविटेशनल फोर्स। सो कैन आई से दैट दिस इज योर स्ट्रॉन्गेस्ट। ओके, एंड दिस इज द शॉर्ट रेंज। Longest range is gravitation. Okay, so it is only up to 4 to 5 Fermi. Okay, and nuclear force is same between neutron, 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 proton, and proton. Nuclear force बोल रहा हूँ. And nuclear force is independent of. It is independent of your charge. Charge पे depend नहीं करेगा. And it is non-central force. Theoretical questions के लिए याद रखना है बेटा. So net force जो रहेगी, it is because of nuclear and electrostatics. Net force. It is because of nuclear plus electrostatic force. That means this is very important, better. Force between neutron and neutron is equals to force between neutron and proton. This will be greater than force between proton and proton. You already आ चुका है बेटा. So be little bit careful related to this relation. Force between neutron neutron is equals to force between neutron proton, and that is greater than of your proton and neutron. Here it is independent of your charge. Okay, and it is your short range, and it is the strongest of all the forces. Okay, radioactivity वगैरह नहीं है, so don't bother about the radioactivity alpha decay beta decay. बहुत रेयर केसेस में है. एक ऑप्शन है वो छोटा खाली बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन के अंदर अब छोटा सा लिखना है, वो एक याद रख लिए तो बस से. आपके क्लासेस के टाइमिंग क्या रखना है आप लोग जरा बोले तो इसके हिसाब से मैं प्लान कर लेगा. मैं तो तरावी के बाद सोच रहा था, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग से एयरिंग करके तो लोग पता नहीं आप लोग क्या करते हैं. अगर कॉलेज जाने वाले कॉलेज जाते हैं, ग्रैंड टेस्ट वगैरह लिखना है. अरे आप लोग को मैं 10 प्रैक्टिस टेस्ट भेजे थे, खत्म कर लिया आप लोग?